So I've started once again. So now let's go over there and let's look ki अपन personal administration, how to configure the personal administration, how to configure the personal action PA40 in SAP. ठीक है, तो इसके लिए हमेशा याद रखना, आई मीन आई हैव टू फर्स्ट परफॉर्म सम ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज. सो आई विल गो अगेन ऑन टू SPRO. आई विल गो ऑन टू SAP रेफरेंस IMG स्क्रीन. SAP रेफरेंस IMG स्क्रीन के अंदर फर्स्ट आई विल गो ऑन टू पर्सनल मैनेजमेंट. ओके, सो हियर दिस स्क्रीन. सो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर मैं हूँ, एंड विद इन दिस पर्सनल मैनेजमेंट आई हैव टू गो ऑन टू this thing called personal administration. So this is all the PA related activities. So everything that I will be doing, I'll doing it in personal administration only. तो सबसे पहले I'll go into the basic settings इसके अंदर, एंड सबसे पहले मैं मेरे यूजर मेंटेन यूजर पैरामीटर्स, मैं मेरे पैरामीटर्स को मेंटेन कर लूँगा विच इज इंडिया रिलेटेड, कि जो भी मैं पर्सनल एक्शन बना रहा हूँ इट विल बी रिलेटेड टू कंट्री ग्रुपिंग इंडिया विच इज 40. ठीक है, तो वंस आई एग्जीक्यूट इट आई कैन सी कंट्री इंडिया, आई कैन सिलेक्ट इट, आई राइट क्लिक इट एंड पैरामीटर्स क्रिएटेड फॉर इंडिया. वंस आई राइट क्लिक इट, तो मैं यहाँ अब मेरी जो यूजर आईडी है वो मुझे शो हो रही है, एंड आई कैन गो ओवर देयर एंड सी इनटू द पैरामीटर्स कि यहाँ पे ये मोल्गा ग्रुपिंग, दिस MOL is called as a Molga grouping, which is nothing, it denotes the country grouping. MOL, पर्सनल कंट्री ग्रुपिंग. ओके, सो ये पैरामीटर वैल्यू 40 पे सेट है, मतलब इंडिया. अगर मेरे को यूएस के लिए करना होगा तो मैं 10 करूंगा यहाँ पे, अगर मुझे कनाडा के लिए करना होगा तो मैं 07 करूंगा यहाँ पे. ओके, सो एंड सिमिलरली द UGR पैरामीटर ऑफ माइन विल बी 40 ओवर हियर. ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया मेंटेन यूजर पैरामीटर फॉर इंडिया, राइट. अब लेट्स से अगर मैं इसको यूएस के लिए करके देता हूँ एज एन एग्जांपल कि क्या डिफरेंस आता है. So if I select USA in this case, then you will see the parameters value of mine is changed. यहाँ पे देखो मोल्गा ग्रुपिंग की वैल्यू 10 हो गई और यहाँ पे UGR पैरामीटर की वैल्यू 10 हो गई. मतलब मैं यूएस के लिए अब कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर PA40 हायरिंग एक्शन को बनाने के लिए. सो आई अगेन गो बैक, मुझे तो इंडिया के लिए करना है, सो आई कैन गो ओवर देयर, सेलेक्ट दिस वन. I'll select India. I'll right click this one and parameters now created for India. So I'll again double check the parameters. So Molga grouping of mine is 40 and UGR parameter of mine again is 40. So I'll go back. So ये मेरा हो गया. Now I'll go over there and maintain the number range. अब देखो number range का फंडा क्या होता है, I'll explain you. Okay, so till now we have not started actually with the personal action configuration. ये कुछ basic prerequisite है जो मुझे configure करनी पड़ रही है यहाँ पे. इसमें मैं write down कर देता हूँ maintain user parameters. I'll include the menu path. Either ways आपके पास में recording रहेगी, so you could also be able to see it over there. But I'll include the menu path so that you don't you would not be troubling yourself. So maintain user parameter again 40, which is for India. Then what? Then I'm determining the number ranges. अच्छा, what is a personal number or personal ID? पर्सनल नंबर, पर्सनल आईडी और एम्प्लॉय आईडी अपन ने बहुत बार पहले इसके बारे में बात भी की है, क्या होती है. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं जैसे यहाँ पे /o में दूसरी स्क्रीन चालू कर रहा हूँ, PA20 कर रहा हूँ और PA20 के अंदर मैं देख रहा हूँ तो ये 21 है. सो व्हाट इज दिस पर्सनल आईडी? यूनिक आईडी सर, यूनिक नंबर.
This is a unique number, right? It cannot be this. It cannot be. It can it be the same for two different employees? No, no, sir. No, sir. No. It's unique and only one. Unique ID. Okay. So number range का फंडा एक्चुअल में इससे ही रिलेटेड होता है. What a number range generally do is like I'll again okay, I'm going back again. I'm checking. Maintain number range intervals for personal number. Okay. अब देखो इसका मतलब क्या होता है. I'll go into the interval यहाँ पे. Okay. अब how many digits can you see over here? 8, sir. 8 digits, right? So your personal number or a unique ID will be the 8-digit number. अब देखो क्या होता है कि in most of the in some of the cases or maybe in the most of the cases, in an organization, what they generally decide is like, let's say if anyone working in Maharashtra, अब क्योंकि जैसे see I have created this TMMH, right, personal area of mine. So let's consider TMMH. If anyone working in TMMH personal area, then his number digit, employee number digit, let's say यहाँ पे मेरे पास availability क्या है, let me check first that one. Okay, then his employee number should be from 1 to 9999. एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं भी यहाँ पे. तो मतलब जितने भी लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे होंगे, दिस इज जस्ट अ सिनेरियो, दिस इज अ रैंडम सिनेरियो दैट आई एम टेकिंग. ये सिनेरियो समझ में आ रहा है कि इनका पर्सनल नंबर 1 से लेकर 999 तक के होना चाहिए. Yes, sir. ठीक है. तो फर्स्ट इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट मी डिलीट दिस वन. Okay. Okay, I'm changing it as of now. Let's say उनका पर्सनल नंबर होना चाहिए 0010000. 8 digits. Yes, 8 digits से लेके 00100 से लेके 100 तक. सो मैं ये चाह रहा हूँ कि उनका पर्सनल नंबर ऐसा होना चाहिए, मतलब इट शुड बी विद इन दिस रेंज ओनली. 100 एम्प्लॉइज. From 1. So this I am talking about. Okay, चलो ये भी ऑलरेडी क्रिएटेड ही है सिस्टम के अंदर. सो लेट्स टेक from 101 to
300. So this should be the personal number of those employees. So यहाँ पे सबसे पहले जाके intervals के अंदर what I will be doing, I'll actually creating a new field. यहाँ पे this number digit that I'm actually giving, I'll give a 04, and now I'm creating a number range over here. What is the number range that I'm creating? I'm creating it from 101 till 300. No, okay. So this is the number range that I'm creating. ठीक है. अब now this external sign I will be talking about on a later stage, but let me first enter it and save this one. So ये मेरे पास में एक number range create हो गई है with the number grouping of 04. So I'll save this down. ठीक है. So this is the number range that I will be utilizing. Basically ये क्या signify कर रहा है कि TTMH जो कि मेरा TTMH जो कि मेरा सब एरिया है, जो कि मेरा पर्सनल एरिया है, उसके अंदर मैं जो भी हायरिंग कर रहा हूँ, इट शुड फॉल विद इन द सेम नंबर रेंज ओनली. अब यहाँ पे तो सिर्फ मैंने नंबर रेंज क्रिएट की है. दिस फील्ड वेयर इज द प्लेस वेयर आई विल डिफाइन दिस फील्ड. वी हैव स्पोकन अबाउट देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिफॉल्ट फॉर नंबर रेंजेस. ठीक है. तो हर चीज का डिफॉल्ट डिफाइन करने के लिए आई हैव टू एक्चुअली गो ओवर देयर. आई मीन देयर इज एक्चुअली अ वे वेयर आई कैन डिफॉल्ट द नंबर रेंजेस. So how can I default the number ranges over here? So for an example, there is a numker. There is this feature called numker. यहाँ पे I have to create a groupings. So first I'll select this numker. I'll select this create nodes, and then I'll create a field for decision operations. Then I'll right click it. So field for decision operations के अंदर I'll take the BU KRS, which is the country code first. ठीक है. तो जैसे इस केस में the country code I have already taken. Like okay, so let me again do this one, and I'll click on transfer. So can you see एक और बार company code आ गया. But since they have already taken this company code, मतलब एक ही बार generally company code यहाँ पे लिया जाता है, you cannot create it again and again. So I'll delete this one. So company code created है यहाँ पे already, and company code के अंदर TTIN created है. Now what is TTIN? That I can go on to this company code. I can select first this company code and go on to create nodes. तो जब भी मैं nodes create करने जाऊंगा तो ये मुझे मेरी या फिर दूसरों की भी company codes को दिखा देगा. तो my company code is TTIN. So this one. Similarly, अगर आपने जैसे कोई company code create किया होगा तो वो आप filter के अंदर जाके देख सकते हो आपका क्या है, and then you can assign your company code directly from here. So once you do that, your company code will appear directly here. ये मैं अभी यहाँ पे delete कर देता हूँ. So let me delete this one. Now what I'm actually doing, I'm selecting this company code of mine. I'm going again to create nodes, and again field for decision operations. Field for decision operations write करने के बाद में it will give me an personal area, employee grouping, employee subgrouping, and this one. So मुझे यहाँ पे personal area select करना है. So I'll select the personal area. I'll click on transfer. So again अभी ये यहाँ पे इसी node के अंदर देख रहे हो एक और node create हो गया है, which is a personal area, and then the other node is the otherwise. यहाँ पे this WERKS works is nothing, is the code is the 5-digit code which is generally given to the different fields which you are selecting it for default. तो वर्क्स के ऊपर I'll go over there, select this one. अभी मैंने define नहीं किया है कि कौन सा personal area. So I'll select this one. I'll go on to create node. अब यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि मेरा यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा कि मेरे TTIN के अंदर मैंने कौन सा पर्सनल एरिया मेरा क्रिएट करके रखा हुआ था.
तो which was TMMH. I've wrote TMMH and then right click it. तो ये मुझे शो कर देगा कौन सा है TMMH, Tata Motors Maharashtra, which is a part of a company called TTIN and a country grouping 40. So I'll select this one and then I'll click on copy. So ये यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, this otherwise I can delete it. I mean, you don't have to keep this one. अब हमेशा याद रखना, whenever I am creating any kind of a number range, तो ये जो मैंने यहाँ पे TMMH select किया है, I have to provide a return value over here. अब इस केस में return value क्या होगी इसकी? One second. Let me again open that one /o str. पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर अगेन आई वाज गोइंग इनटू द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक सेटिंग एंड डिटरमाइन. यहाँ पे मैंने नंबर रेंजेस डिफाइन की थी. अब मैं एक बार फिर से इंटरवल चेक कर देता हूँ. तो यहाँ पे जो मैंने ये नंबर दिया था 04, ओके, सो दिस विल बी द रिटर्न वैल्यू ऑफ माइन इन दिस केस. कि मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कि TMMH की जो रिटर्न वैल्यू है, इसकी जो रेंज होगी नमकर फीचर के अंदर TMMH की, शुड बी दिस रेंज. सो इसके लिए मैंने यहाँ पे 04 कोड लिया था. तो 04 आई कैन असाइन इट डायरेक्टली ओवर हियर. तो ऑटोमेटिकली जब भी मैं हायरिंग परफॉर्म करने जाऊँगा, इफ अ हायरिंग इज जनरली टेकन प्लेस फॉर TMMH, तो उसका जो पर्सनल नंबर जनरेट होगा विल बी फ्रॉम दिस रेंज ओनली. तो I'll select this one, I'll go on to create node and यहाँ पे मैं field select करूँगा return value. तो return value मैं यहाँ पे provide करूँगा 04. I'll click on transfer. अब जब भी मैं ये feature create करता हूँ या इसके अंदर कुछ भी changes करता हूँ, I have to first save this one. Then remember you have to check it. तो now it's telling me decision tree is error free, इसमें कोई error नहीं है, and then I have to activate it. If I don't activate this field over here, ये work करेगा ही नहीं. So every single point of time, whenever I'm making any kind of a change over here, then I have to activate it. अब आप लोग अपना कैसे create करोगे like इसके अंदर? So basically what you have to actually do is like first you will go into the number range. तो जैसे मैंने यहाँ पे 04 लिया है, right? Let's say Ajit is creating one. तो ये तो display mode में हूँ. I'm going back. I'm going again into the interval. Let's say Ajit को create करना है. तो how he will be creating it? He can either copy this one, okay, so don't copy, but create new and make sure आप जो number range लो उसके बाद ही लो. इसके बीच का कोई भी number range मत लेना. तो let's say he is taking this number range from 300. यहाँ पे he is giving his own two digit return value जो उसको set करनी है, let's say AJ, and he is defining till 400, 300 to 400, okay. He then can save it. So ये can you see enter intervals without overlap? Okay, कहाँ overlap हो गया? Okay, again see 300 I have taken it over here, so I have to take 301. I'll hit enter again. So it's correct and now I can save it. अच्छा, तो for an example, you will be saving your interval digit or interval range over here.
then आप इसमें जाओगे the default for number range, and what you actually need to do is like you just keep it as it is. Don't delete anything in this one. Just go on to company code, create node, and then you can select your own company code जो इसके अंदर दिखा रहा है, जो भी आपने बनाया होगा. Let's say he made Apex, ठीक है? So he can select this Apex. He can go on to this one, copy. SWIN. कौन सा है आपका? SWIN देख सकते हैं हम. SWIN. So Yes. his is SWIN. Yes. So he can go and select this one. You can Swift then, LLP. अच्छा, अब now he will have to go on to this one SWIN and then create. And इसके अंदर field for decision operation, सबसे पहले आपको personal area इसके अंदर choose करना पड़ेगा. So field for decision operation के अंदर which one? Personal area. Personal. Transfer. अब फिर again he'll have to go over there onto this personal area, click on node and search your personal area first. Personal area क्या है आपका? Okay, anyway, आपके कंपनी कोड से ही select कर लेते हैं. मैं यहाँ पे कंपनी कोड भी डाल सकता हूँ, तो मुझे दिखा देगा कि उसके अंदर कौन से पर्सनल एरिया है. So for an example, SWMH, right? So I can select this one, and SWMH मेरे पास में आ गया. So I have to, I mean, delete this, otherwise you'll get confused. ठीक है? Okay. तो ये delete कर दिया. अब again I'll select this SWMH. I'll go on to create nodes, and यहाँ पे मैं return value set करूँगा. रिटर्न वैल्यू क्या सेट करूंगा मैं यहाँ पे AJ. ये क्योंकि this is the field, right? Like this, I provided the 2-digit character over here. So this character will always be your return value set into the this feature. You click on transfer. So इसकी return value ये set हो गई. मतलब I mean, whenever I will be hiring any employee, whenever he will be hiring any employee, let's say for SWMH, then the personal number would always be get selected from this range automatically. तो वो आपको personal number खुद देने की ज़रूरत नहीं है. I mean, this is system actually decides in this case. Okay, so I'm deleting this one so that he can practice it. And one second. So before like first I'll save it. Then मेरे को उसको check करना है यहाँ पे. फिर मुझे उसको activate करना है यहाँ से. Feature was generated. ठीक है? So now as of now I'm deleting this one so he can do on his own. So setting up defaults in SAP, ये एक important topic है. ये बार-बार पूछते हैं कि number ranges के लिए कौन से default feature का आप use करते हो. So you can basically say numker is actually the feature we generally use it. I'm also deleting this number range. Okay. So let me again go back to this one. Change and check activate. जो था मेरा उसको मैं activate कर रहा हूँ. 204. Okay. तो ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now coming back to the next step. Now I have to assign the organization data. ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि मैंने ये स्टेप की है कि नहीं की है, but I'll this is where I'm actually starting. One second. Define employee attributes. मेरे ख्याल से मैंने ये पहले कर लिया है, but फिर भी so this particular thing is actually a part of your employee structure, your personal structure.
रिमेंबर जो अपन ने वो एम्प्लॉय ग्रुपिंग क्रिएट करके सब ग्रुपिंग क्रिएट की थी. So this will be very much the part of that. Okay. तो इसके अंदर I'll first have to I'm into personal management only. Personal management के अंदर personal administration and इसके अंदर there is a field called organizational data and within that I'm into organizational assignment. ठीक है. So I'll first click check on to this one, define employee attributes. And इसमें सबसे पहले country grouping, I mean don't select it randomly, go over there and check it for India, क्योंकि employee groupings that we have created is actually for India. तो जो भी आपने employee grouping create की होगी वो आपको 40 select करने पे ही दिखेगी. So मैंने कौन सी create की थी, remember X, this one is like what, X and 1A, X and 1B, which is what, India permanent and hourly. India permanent but salaried. Similarly, India contract but salaried. India contract plus hourly, which is 2B, and India trainee plus 2C, which is hourly. So what is this employee subgroup grouping activities? I can first go on to this one, help, let me check. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, this is a contract type of employee that I'm doing, okay, but he is still an active employee. Employee तो active ही रहेगा system के अंदर. So I can go on to help and check. 1, I'm using it for active employee. 2, I'm using for retiree employee. 3, I'm using for early retiree. 9, I'm using for other. And 4, I'm using for part-time retiree. तो इस case में most of the time or almost of the time I'll be using 1 for every kind of grouping that I'm doing. इस case में in the field 2, if industrial worker hourly paid and salaried paid. अभी salaried के लिए तो मैंने यहाँ पे define कर दिया था salaried India, right? तो यहाँ पे hourly है तो I can select 1 and similarly यहाँ पे salaried है तो I can select 2 and यहाँ पे hourly है तो I can select 1. This again I'm selecting 1. ये समझ में आ गया? This 2 is actually for salaried and 1 is actually for hourly. 2 is for salaried, 1 is for hourly. I'm defining the employment status over here. Similarly, in the case of training, I can go on to help, check, is it a trainee apprentice or trained or 9. So basically, whenever any employee joins in an organization, if he's an मतलब ये मैं बता रहा like why am I segregating this one? क्योंकि मैं इसके अंदर एक fresher और एक experience की category भी create कर सकता हूँ. So but here in this case, whenever I'm joining, I'm creating any employee, they are actually basically trained onto their technology या फिर trained onto their activities जो भी उनको चीजें करनी है. So I can select 2 in both the cases. But in the case of trainee, let me say I'll select 1 because I have to train them. So they have to first get trained. Again, employment status इसके लिए I can decide कि वो hourly pay होगा hourly, right? So I can select 1 in this case. Similarly, hourly trainee. So active employee, okay, he will be an active employee, so 1 in this case. Okay. So make sure whenever you will be whenever you will be creating your employee groupings or subgroup, to make sure to save this one, this activity types. Otherwise, at the time of hiring, we will be getting the difficulties. So I've saved this part. Going back. Okay. Now, अपन ने payroll create किया था. Which was the payroll that I have created? I have created, one was P1, another one was P2, another one was P3. तो ये मैंने तीनों के तीनों individual payroll यहाँ पे create कर दिए थे, right? Remember here, P1, P2, P3, P1, P2, P3.
बट यहाँ पे अभी तक के मैंने कहीं पे भी पेरोल के अंदर डिफाइन किया था क्या कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से इफ आई वांट कि टीएमएमएच के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं दे शुड बिलोंग टू P1 और सिमिलरली टीएम के इज अनदर पर्सनल एरिया ऑफ माइंड या फिर लेट्स से टीएमएमएच के अंदर जितने जो भी मेरे सब सी दिस इज अ पर्सनल एरिया राइट दिस इज अ पीए इसके अंदर मेरे सब एरिया कौन कौन से हैं 0001 0002 ठीक है तो मैं कंडीशन मेरे को क्या डिफाइन करनी है कि 0001 0002 के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं मेरे दे शुड ऑटोमेटिकली फॉल विद P1 पेरोल एरिया सिमिलरली अगर 0003 की बात है और 0004 जो मेरा सब एरिया है दे शुड ऑटोमेटिकली गेट P2 पेरोल एरिया सो this default I can set directly in a feature called as ABKRS ठीक है so I can directly set the default over here this field check default payroll area so I can click on execute and now can you see this field so मैं इसको यहाँ पे delete कर रहा हूँ because I don't want this to be in this way one second so I'm deleting this one okay so there is this field called ABKRS I'll select this one and मैं यहाँ पे जो भी मेरी conditions है मैं वहाँ पे define कर सकता हूँ I'll go over there select first field for decision operations अच्छा हर जो भी आप default SAP के अंदर जो भी create करना होता है you always have to use feature in this format only feature अलग अलग हो सकते हैं जैसे कि number range के लिए मेरा feature था NUMKR number and payroll area के लिए मेरा feature है ABKRS तो इसके अंदर सबसे पहले आई एम सिलेक्टिंग कंट्री ग्रुपिंग अगेन दिस इज जस्ट द वे दैट आई एम क्रिएटिंग सो मोल्गा के अंदर आई कैन देन अगेन गो ओवर देयर एंड क्रिएट नोट एंड कंट्री ग्रुपिंग मेरी कौन सी होनी चाहिए लेट्स से आई वांट टू डिफाइन 40 ओवर हियर एंड आई विल राइट क्लिक इट आई विल अगेन गो ऑन टू 40 अब 40 के अंदर अभी तो मैंने कंट्री ग्रुपिंग क्रिएट की है लेट्स से आई एम गोइंग 40 के अंदर इफ आई वांट I can directly here मैं कंपनी कोड को भी स्किप कर सकता हूँ I can directly see my personal area over here क्योंकि मैंने मेरे पर्सनल एरिया को भी कंट्री ग्रुपिंग 40 को असाइन किया है बट इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू कंपनी कोड राउट ऑल्सो कि आपने पहले कंपनी कोड क्रिएट कर लिया है वहाँ पे क्रिएट क्या मतलब असाइन कर लिया एंड देन यू स्टार्ट असाइनिंग योर पर्सनल एरिया एंड सब एरिया विद इन इट so as of now I'm assigning personal area I mean keep it as it is we'll delete it later so again I'm going on to works I'll go over there and create node and then I'll search for my personal area which is TMMH I'll right click this one I'll again select this one I'll select for field for decision operation मेरे को इसके अंदर मेरा personal sub area define करना है transfer so again personal sub area के ऊपर मैं जा रहा हूँ I'll go again onto this one मैं यहाँ पे फिल्टर करूँगा कि मेरे TMMH के अंदर कौन सा let's say I'm putting only TMMH only ये मुझे ये बताएगा कि मेरे इसके अंदर कौन कौन से सब एरिया हैं so these are the 4 sub areas that I have created earlier so I'm selecting 2 over here at the moment okay so let me select all the 4s Three, 4. So these are the 4 personal sub area of mine. Now मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई personal sub area number 1 के अंदर hire हो रहा है तो he should directly fall into P1 category, P1 payroll area. तो I'll set the return value as a P1 here in this case. यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये भी P1 में ही हो. So again in this case also I'll set the return value as P1. 3 के अंदर I'm requiring कि वो P2 payroll area के अंदर आया मतलब weekly so I can go over there and directly set it as a P2 and 4 के अंदर I want कि वो भी P2 के P3 के अंदर आया let's say on 28th that he should get his salary all the employees so I'm setting P3 so इस तरीके से मैंने defaults इनके लिए यहाँ पे set कर दिए now let me delete this otherwise मेरे को यहाँ पे ये फिर error देगा
So I'm deleting all the other fields. Let me save this one. I'll check, and now I'll activate. So this field is set. अभी again मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि whenever anyone hires any employee, अगर वो TMMH के अंदर पर्सनल सब एरिया 0001 पे हायर कर रहा है, तो P1 should be the payroll area automatically assigned to him. Similarly, अगर वो 0003 के अंदर हायर कर रहा है, तो P2 should be the automatic payroll area assigned to that guy. So this I have activated it. Let me go back. I'll again go on to SPRO. So ये default for payroll area एक चीज हो गई है. So we have discussed default for payroll area कि इसको कैसे करते हैं. Now, concept of personal administrator. देखो, guys, okay, I'll explain it directly into the system only. इसकी भी मैं steps यहाँ पे note कर दूँगा, so you don't have to worry about. Again, I'll go into the same path, which is personal management. Within the personal management, I'll go into personal administration. इसके अंदर I'm going into the organizational data. Organizational data के अंदर I'm going into the organizational assignment. And here I can see that I can define administrator. अभी देखो administrators कौन होते हैं? Administrators are the person, generally administrators are those persons who are responsible to fulfill fulfill or perform the employee related activities. जैसे कि पेरोल, देखो मैं तो कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, बट देर आर पीपल जिनको पेरोल रन करना है फॉर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज. जैसे कि कुछ लेबर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, सो दे देमसेल्व्स विल नॉट बी रनिंग देयर ओन पेरोल इन द सिस्टम. ठीक है, देयर इज एक्चुअली अ डेडिकेटेड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर इन द सिस्टम जो उनका पेरोल रन करता है. That is also true for time related activities, and that is also true for let's say any another related activities, let's say recruitment या फिर कुछ भी हो गया, या onboarding ले लो. ठीक है, तो how can we create different administrator into the group? First I'll have to design a grouping. So let's say ADM1, ये मैं कुछ भी नाम ले सकता हूँ. You can take your like you can define any 4 or 5 digit code over 4-digit code over here. It can be a numeric, it can be alphanumeric, it can be a character also. So ADM1 is just the one thing that I am taking. यहाँ पे मैं administrator जो create कर रहा हूँ, let's say I'm creating it for PYL, which is payroll, for payroll. So मैं यहाँ पे administrator create जो कर रहा हूँ, let's say I'm creating PY1, उसका नाम होगा दिनेश, उसका ही इज मिस्टर दिनेश, उसका XYZ कुछ भी टेलीफोन नंबर होगा. let's take this one. I mean you can take anything. This is just a dummy system. So but in actual there will be his telephone number which will be there. So 991 something, let's say 0. SAP सिस्टम में उसको क्या नाम होना चाहिए? Let's say again Dinesh. I'm again creating a set. अच्छा, this I'm grouping actually. ठीक है, so I can take one grouping only at this point of time. So here in this case I'm creating time administrator की जो सबकी time sheet fill करेगा. His name is let's say Suresh. इसका टेलीफोन नंबर कुछ भी ले लेते हैं, let's say 20. I'm again creating
ADM1, I'm again creating a different administrator. Let's say कि मुझे एक administrator create करना है for all the hiring related activities जिसको मैंने नाम दिया personal administration के लिए. तो PA1 let's say as an example. So let's say Kavya. I'm saving this one. तो अभी I have created this grouping, right? अब मेरे को क्या करना है कि whenever I'm hiring any again the same similar kind of a scenario that whenever I'm hiring any employee for TMMH, तो ये तीनों के तीनों personal administrators उसके अंदर assign होने चाहिए. So I have to again go on to, there is a different feature for this one. ये मैंने सेव कर दिया है. So I can go on to define administrator groups. तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट डिफाइन कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स का. ओके, सो अगेन देयर इज दिस फीचर फॉर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स इज नोन एज पिंच, PINCH. इसके अंदर ऑलरेडी देयर इज अ मोल्गर ग्रुपिंग व्हिच इज अ कंट्री ग्रुपिंग. कंट्री ग्रुपिंग के अंदर आई एम डिफाइनिंग इट फॉर 40. अगेन ओके, सो लेट मी डिलीट दिस वन फर्स्ट. सो आई हैव डिलीटेड दिस वन. ठीक है, यहाँ तक के तो you know like how we can generally go over there and create. Again I can select WERKS, this one, and then I can go on to create. I can select मेरा personal area कौन सा है, which is TMMH. I can right click it. I can select this one. I can transfer this one. I'll again go on to this one. I can select this one. अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ, I don't want to select the field for decision operation. मैं चाहूँ तो मैं अपनी return value directly यहाँ पे भी send कर सकता हूँ. It doesn't has to be कि for any particular sub area that I'm trying to do. I just want कि if the personal area is TMMH, then the return value for the administrators, जितने भी जो administrators मैंने create किए हैं, it should already be assigned to that employee. So I can directly set up the return value as ADM1. जो मैंने अभी ग्रुपिंग क्रिएट की, जिसमें पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर, टाइम एडमिनिस्ट्रेटर और पर्सनल PA एडमिनिस्ट्रेटर तीनों के तीनों अंदर आ गए. यू कैन बी एबल टू सी इट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर कि अपन ने ये क्यों क्रिएट किया है. सो व्हेन एवर आई विल बी परफॉर्मिंग अ PA40 एक्शन, तब ऑटोमेटिकली जो मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग सेट की है इसके अंदर, इट विल ऑटोमेटिकली पॉप अप ओवर देयर. अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मैं ग्रुपिंग सेट नहीं करूँ, शुड आई वांट टू एंटर इट मैन्युअली, दैट आल्सो आई कैन डू इट जनरली. But feature is actually the way where you control most of the activities automatically. So I'll save this one. I'll check it and then I'll activate. Okay, so I'll go back. So this is how I can create the personal administrator in SAP. And I can default the system administrators in SAP. ठीक है, तो that's how we can generally do it.